अभी अभी मैचों से वापस लौटे हैं. So luckily he is one of the few persons who doesn't refuse me. So I take liberty like you, so don't refuse. So actually ये ढाबा बनाया था. It is taking a lot of computing. So उसमें समझ में आता लोगों को ये है कि वही जैसे मैंने कालीकट में खास्ता बनाया था जिसको 3D पिक्चर बनाएंगे और हाँ चलो चलिए कुमार जी वो स्क्रीन शेयर कर देंगे. Is this screen clear to you all? Yes, sir. अच्छा, now go down. YouTube चालू कर दिया? हाँ. Now, the very purpose of doing this whole exercise was using digital technology for academic purpose and making it very efficient and low cost. Low cost to the extent it can be close to zero cost. So the moment you make something close to zero cost, you have freedom to decide to give it free also. Number one. So when this dhaba was by chance an occurrence to give a talk to IIM Ranchi in 2019 for SM convention. And that was entrepreneurship and SM. I didn't know how to connect because I did not have experience of business. So I said, long back I had thought of opening a dhaba for my students, which did not materialize. What about trying to make a dhaba and out of that experience speak to the participants of the conference? That is how in one day the design was done and in 13 days it was inaugurated. Having done this, it became very difficult what to do with it because it was Corona days and there are no customers. So how to make a business viable without customers? So then I found we do a lot of things which is possible to put in digital form and facilitate academics. Right then, the IIM Act came, which made जरा ऊपर चलना बेटा नहीं sorry नीचे हाँ ये which section 7G of IIM Act said reduce the cost of management education, make management education more inclusive, and you can't do it unless you have sustained effort for development of faculty and trainers. And you make concerted effort for developing course material relevant for India. These are the 4 requisites which can help in making India Atmanirbhar in terms of management education at least. So that is how we started thinking of making this dhaba. Now, so this dhaba started as a meals dhaba, but gradually we found it is at the time of inauguration we realized we have capability for interacting with people online, and sitting in dhaba we can organize talks and panel discussions and other things. Lucknow is not the place where all the experts in the country are available. So base is Lucknow, but you can interact with people anywhere in the country or even outside the country. So
Dhaba then became having two broad menus. One is physical menu, meals, and the other is intellectual. And in both, the concern I had was, don't try to do it yourself only. Let people learn and also help them in imparting that learning to others. You remember, Professor Krishna Mohan, this is what we had said. If we had to go for large scale expansion of management education at grassroots level, we must train faculty members and give them course materials so that they can. We literally jumped overboard to say, why not make cases in vernacular? So at least 2-3 cases we have which are in 12 languages. I wish 25 cases we were able to complete in 12 languages, and that would have benefited the student community and managers in different parts of the country. So anybody who reads that case, all the people who are undergoing that course, they will understand the same thing in their vernacular also. Anyway, and variety of items, because after that, suspension of the teachers program after 6 sessions, I didn't know what to do. So I had thought of meeting Lata Mangeshkar. So by chance, I happened to meet Lata Mangeshkar. So I felt if I cannot sing a song which requires good throat chords, then why not play with fingers, same song. If you do it, your deficiency in not being able to sing a song is overcome to the extent you can play any song of any singer, any music director. And then when I tried, to my amazement, utter surprise, I found I was able to play Casio. And then, since there was no mentor, I found if one wants to learn that, it's not so difficult an art. So I started writing experiences, and that is where I come to next slide. Go ahead. Next. Down, down, down. So there are two. In intellectual meaning, there are a lot of things that started happening. We were able to have conferences, and the moment we did it online, I was able to attend a conference in USA, which I had never been able to do because I didn't want to go to USA, and I cannot travel anywhere now. In the process, I started wondering how the hell I have been able to play Casio, which I wanted to learn for 29 years and could not, just by touching feet of Lata Mangeshkar, how it is. So a friend of mine, I checked with his wife, what is the design of human brain? And then I found, to my surprise, 70% of the synapse. 70% of the brain's capacity of any individual for learning remains unutilized till he retires. That's right. That means 70% of that ability, and that has not died. That doesn't die. So you can change the stream and start learning something else. Then I find I could learn how to make idli, how to make dhokla, how to make pulka, how to make khichdi. I mean, not very complicated things. But I never ventured because I thought I cannot do it. Then I said, how to make videos. And since my children are in Bangalore and Gurgaon, I keep moving between 3 places. So this movement creates a problem. So
here is a friend, सामने आ जाओ. He created a server on my laptop. So key data that I have, all the files, literature, everything that I have, I put on my laptop. And when I move from here to Bangalore, anybody can access that laptop as a server. So we can make server, and we did not spend. How much money we spend, Mickey? I was prepared to spend, buy a new laptop under the advice of Uptake, which would have cost me 3,60,000 rupees is cost of software. And when हमारा साहब ने वो बना दिया, then we have two servers on desktops and one on laptop. So I can dedicate, even if one fails, I can switch over to another server and conduct classes, conduct programs, conduct events uninterrupted. When this became, then we thought of focusing on literature development. So I learned how to write a book, how to format it to get it printed. I got that. But when I ordered those books for IIM Lucknow, the publisher, the printer, printed it, dispatched it, but the book never reached IIM Lucknow. FedEx, one of the leading courier service, did not deliver, and worse is they forged the signature of our librarian that they have delivered. So how to? Then I said, why not forget about all things, put on website, let people download the soft copies and print themselves. The moment we did it, we found we could reduce the cost to 1/4. And then because there was a soft copy, Mr. Padam also helped in making audios. So even if somebody is not able to see, he can listen and prepare. If somebody is not well, he can just play the audio and prepare for the class and attend the class from the hospital bed. Then I found people wanted short cases. So out of experience, since I have been using SM for my day-to-day work in whatever capacity I was working, so 50 short cases got written and 50 long cases were there. So these, then research book, and then I found there is a lot of crisscross thing possible. In IIM Calicut, I learned how to conduct online classes. Then I found I can narrate experience, how to write short cases, how to write long cases. But even more interesting thing is happening, that is, can I teach SM subject musically? So once I know how to make video where lyric yours, music yours, you are the singer, of course, hoarse voice, but you can combine a karaoke music and write lyrics and sing with karaoke, it is better. So I tried this and in a session with the doctoral students at MDI, and I found this goes very well. So in future, people may like to use the new methods, and especially those who have crossed 50, 55, as they are approaching 60, there is a gold mine waiting for you. You'll get all the time that you wanted to do new things. You'll get all the money that you needed to do that, because there will be no expense, no item on which you can spend huge amount. Where will you spend after retirement? So everything will be done. The only thing that we have to learn is learn to learn new things. And I wish all the people,
ये तो खत्म हो गया है ना। अब जरा उसमें चले जाओ जो इनविटेशन है ना, अरे सॉरी, यूट्यूब पे, यही मेरा यूट्यूब चैनल है, ये है ना नीचे, हाँ इसी पे चले जाओ। नाउ आई टेक यू टू माय यूट्यूब चैनल, कुछ करने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे चले जाओ बस, और ऊपर के पे प्रेस कर दो, के, हाँ नहीं इस पे मत, उसी पे आ जाएगा बेटे, सुनो, यूट्यूब पे जाओ और के पे प्रेस करो, एक नया बटन दबा दो, एक नया बटन हो प्लस वाला दबाओ, हाँ है ना, अब जाओ उधर, राइट से, राइट 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 राइट, हाँ नीचे, हाँ और इस पे आ जाओ यूट्यूब पे, ठीक है। अब के पे दबाओ, मैंने अच्छा, अब ये जो है ना 29 व्यूज लिखा हुआ ना, ये तो इससे थोड़ा सा और राइट चलो, राइट चलो, राइट चलो, राइट चलो, राइट चलो, ये मोबाइल में चलो, नहीं इससे अगला, हाँ वही प्रीव्यू वाला ही होगा, शुरुआत में ले जाओ, हाँ चलो, हाँ खाना खाना हमें बहुत मीठी लगे रे, खाना भी हमने ढाबे आना, खाना खाना हमें बहुत मीठी लगे, आलू पराठा है, पनीर पराठा है, चिल्ली पराठा दही साथ है, इडली भी है, ढोकला भी है, धोखे का धोखा भी है, खुद भी आओ, माँ को लाओ, खाना चाहिए खाना, हमने ढाबे आना, यहीं पे खाना खाना, हमें बहुत मीठी लगे रे, खाना भी हमने ढाबे आना, खाना खाना हमें बहुत मीठी लगे, भी है खुद पर भी, ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी है, एसी भी है, बिस्तर भी है, गीजर चाय ठंडा पानी भी है, चाहो सीखो या सिखलाओ, या बस अब बस यहीं पर रोक देना, यहीं रोक देना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी, गलत वाला खुल गया, गलत वाला खुल गया, ठीक है इस तरह नीचे जो HTTP लेगा, हाँ वो लिंक, हाँ हाँ, नाउ दिस वीडियो PDF वर्जन इज ऑल्सो अवेलेबल, ओके, ये कहाँ लगा दिया, अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब ये देखिए इसमें एक बात और किया, ऊपर चलो, ऊपर चलो, हाँ क्लिक हियर, so this gives genesis of Dhaba. So the same thing, the photographs which are shown in the video, the same thing is put in picture form in PDF file. So you can, because PDF file has advantage of hyperlinking. So every item I can hyperlink. So the first link was Genesis of KK's Dhaba. चलो बैक चलो, हाँ और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, जहाँ क्लिक आए वहां आ जाओ, रुक जाना, click here. Now, if you see, this is the design of Dhaba. इसमें all that is mentioned
in the video is shown. Then sitting arrangement also. That is 9 people can sit and 1 outside. So 10 people can sit. Chalo, back करो. और नीचे आ जाओ. और नीचे आ जाओ. और नीचे जहाँ क्लिक करवाए वहाँ पे. एक मिनट थोड़ा बचो. हाँ नीचे आ जाओ. हाँ ये पराठे पे जहाँ क्लिक लिखा है वहाँ ऊपर. हाँ जहाँ क्लिक. यार ये जो आज खोला चाहिए था उसके बजाय बहुत पुराना वाला खोलना. अच्छा इसका बैक कर लो और नीचे आए. एक मिनट ऊपर से हियर इज और थोड़ा सा ऊपर. Here terms and conditions apply. Now what are the terms and conditions? आप क्लिक करो. हाँ इसको बड़ा कर. नहीं उसको बड़ा कर दो. स्क्रीन पे बड़ा कर दो. हाँ इसी को थोड़ा सा बड़ा. Food is available only when KK is present in Lucknow. Check at HTTP this when KK will be in Lucknow. Just click on. This will give where I'll be found on different dates. So light yellow is when I'll be in Lucknow. Pink is when I'll be in Gurgaon. Blue when I'll be in Bangalore. And if I have some prior commitment, then green. So you can find out whether I'm going to be in Lucknow or not, and accordingly say I'm going to have meals. So now you can have meals on 3rd September, 10th September, 17th September, 24th September. Then you will have to wait till November. Okay, so back. And food is free up to 10 persons only and subject to availability. अगर मेरे पास आलू नहीं रहा तो मैं नहीं दूंगा. अच्छा, learning services are self-explanatory through PDF, video, or audio. इसको भी दिखा दो. The same thing, same PDF file is there. Explanations and clarification can be requested at this number. Charges may apply in certain cases. So if you take too much of time to explain me, there I start charging. Why don't you study on your own and start learning and imparting knowledge? चलो आगे चलो. हाँ इडली में. Okay. Now I am going to tell you how to make idlis, or better still, how do I make idlis. In this video, you'll know the ingredients used. That idli and dhokla, the process of making it same. Only the ingredients change. That means production technology wise, it is same.
raw material is different. So you can diversify to a new product without unnecessarily demanding new skills of manufacturing. And dish is different. Likewise, if I want to make dhokha, I can do it. But if you are making idli, you cannot make dhokha. And therefore, that is unrelated diversification in terms of operations. Sir, it's a great example of economies of scope. The market relatedness is there, but operation relatedness is missing in dhokha. So, if you want to diversify to dhokha, you have to develop that expertise and infrastructure. In idli maker, you cannot make dhokha. So you have to find out how it is made, and that will give you what are the implements required, and you can make dhokha also, no problem. Chalo, back kar lo. इसने पूरा धोखा मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ. अच्छा, नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ. Now the thing is, खाना free है खाना. Up to 10 persons, I can cook myself. 10 parathas. And the total cost, Krishna Mohan, is not more than 200, 250 rupees. So 4 Sundays means 1,000 rupees. And 1,000 rupees in a month is not too heavy expenditure that I cannot bear from my pocket. So I can make khana free. All this is possible if you are not to pay to somebody else for getting that service. The more you learn, what I'm trying to impress is, the more you keep on learning, the less is the cost and the less is the price at which you can deliver to customers. So learning becomes a central ability. That is, if you are willing to learn, a lot of things can be done at dramatically reduced prices. चलो नीचे आओ जरा. अब ये है, ये click here. Now, if you click here, there are two things. One is you can play Casio. Okay? जरा इसको बताओ. Casio नहीं, बोले. हाँ. इसमें how Lata Mangeshkar helped me in playing. So धीरे-धीरे चला. Yes. Why I say people can learn if they are willing to learn. There are just few simple steps. थोड़ा और नीचे और नीचे थोड़ा. These are just 5 steps. You remember that, and you can play a song of your choice on an instrument of your choice. Just 2,000, 2,500 rupees Casio will give you maximum pleasure. You don't need to go for high-end Casios. Okay? And it's not very complicated. Now, following this, I tried to play some tunes. Now, these then, as a tribute to Lata Mangeshkar, I played for her songs, which are originals, are given link in the left side, original track, and the right-hand side tracks are mine. So, एक आध right hand पे click कर दो. चलो नीचे तो हाँ आर ये एक है कैसे आ रहा है ना. अब एक हाथ थोड़ा लेटर ईयर से कर दो.
हाँ, इसी में नीचे आ जाओ। हाँ, और नीचे। अब कोई लेटर ही ऐसे कर दो। हाँ हाँ, बस बैक कर लो। So, simple way of learning the music, and in just 10 months you can make an album. Okay? या ठीक है, बैक कर लो। Now, then even more interesting improvisation was, सुषमा जरा मेरा बोले आओगे, मेरे लैपटॉप वाले बैग में मिडी रखा हुआ है सबसे नीचे वाले पार्ट। Even more interesting thing was that you can play music on the move, record it, and then upload it on website on the move. So next time, Krishna Mohan, if I come to Hyderabad and on the train I feel that I must play a song, right there I can play without disturbing anyone. Sure. Record it, and right at the train I can upload it on website so that next instance anybody can listen to that anywhere, any place. And that is something is very interesting. And Kumar ji, ये जो है ना, जो लोग गाना पसंद करते हैं और लोड करते हैं ना म्यूजिक, अरे आप रात को नींद नहीं, अरे आप बस गाना रिकॉर्ड करो without disturbing songs. क्योंकि when you are playing, you can put earphone, so your spouse is not disturbed, and you can keep the lights off. It's very interesting. After few songs you have played, your hand gets set to the keys. Then you can play blindfold. So even if you switch off light, you can keep playing, and with earphone you can see whether you are going right or wrong. And thus, midnight, and it is especially useful for people who are senior citizen and approaching 70 or 75, because often we don't get sleep. So instead of taking pills, it is better to play music, enjoy yourself, and if it turns out to be a good one, then you can make others also enjoy it. सुषमा मिला, वरना बैग ले आओ बस। हाँ, just this, which you can carry with you and connect with your mobile and play and record on the mobile, and through mobile you can put on website. You don't need broadband for that. With dongle, you can have Wi-Fi in your pocket. So that way you can, now once you learn, you start finding music and lyrics are so closely connected that if you start playing music, after some days, it becomes very teasing exercise. Whenever you talk to your wife, you are talking by singing. सुषमा, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? अरे मुझे मालूम नहीं था, ये जो अपना म्यूजिक डायरेक्टर है ना अन्नू मलिक, वो ऐसे ही गाता है। आप एक लाइन दे दीजिए, मैं आपको गाना बता दूंगा। तो मैं तो सोचता अन्नू मलिक से थोड़ा कॉम्पीट कर लें एक बार। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलो। और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे।
अब ये सरदार आ गया। अब ये देखे नीचे आया एक है क्लिक हियर। नाउ दो चीजें और दिखाऊंगा बस। हाँ क्लिक। ये है हाउ टू टीच दिस सब्जेक्ट फुल्ली, अदरवाइज देयर कुड बी a serious problem. It's like उसको नीचे ले आओ जरा। नहीं वही वही बजने आगे बढ़ा दूं, आगे बढ़ा दूं। दिस डिस्क्राइब्स, हाँ हाँ, इसे 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 एक अगला है, इसे पीछे चलो। हाँ हाँ, चार्ट वाला। हाँ, इससे नीचे एक और होगा। अब जरा एक मिनट रुकना। When doing so, I found where is the basic problem in our covering the topics of SM. Because the chart becomes very complex, and how to understand it simply. You can play this chart, show this chart to the students, and then in any sequence you want to teach, you can teach them. I am explaining this block, I am explaining this block, I am explaining this block. अब जरा नीचे आया, एक मिनट आप देख, मैं कहाँ चला गया, खो गया वो। नहीं। Now every video that I make a PDF version also. वो चला गया, वो बहुत अच्छे से आता है। अब निकाल के रखो, एक फाइल गलत हो जाए। अच्छा, anyway, when people ask who is KK, then I start sending this. You can see who is KK. This is educational qualification. क्या हो रहा है? नहीं, अब आएगा। ये मैंने कोर्स पढ़ाए थे। ये but really very important is KK as a patient. I had 15 ailments, and Krishna, this is very interesting thing. The purpose of our description is not to convey how I can help in facing these diseases and face them with courage, but more importantly, to illustrate that they provide great opportunities which may not come on your way unless you pass through such experience. Sir, I would take it as, nothing can stop you when your focus is very strong and your vision is well defined. Nothing could stop you. So your whole biodata, complete thing. When I was making this, I never realized how many innovations I'd done in my career. And they turned out to be 160. Someone, would you ever believe in 45 years of my career, I have introduced 160 plus innovations. Many of them required engineering knowledge. Some required
management education. But it's extremely fascinating that without realizing, you find so in this, and then I said, click after post-retirement what I did. These are the things which I try to do post-retirement. And even more fascinating thing happened, that even Corona did not deter. These were the things which I had done during Corona Kal. So I find all that I have done in last 6 years, in whole of my 40 years of industry experience in service, I had not been. I wished to do it, but I had never been able to do it. So when I started falling sick, and there was a lot of pain, operations, severe pain, I was just praying, God, why don't you just call me? There is no point. I'm not able to even sleep due to pain. But then I found, if God had taken me away, I would not have been able to do these things which I did post-retirement. So nature is very, very interesting thing. When you feel very desperate, right then, nature is sowing seeds for new opportunities, which you will never occur to you if you have led a comfortable path. इसीलिए हिंदी में लिखा है ना, सोना जो है वो जब आग में तपता है तभी पता चलता है उसकी पहचान क्या है. Now, without Now, I would not like to bore you with more, because there is something, how to conduct class spontaneously, anywhere, anytime, to anybody, at any place. It's spontaneous. And when you are teaching, a student says, sir, ये clear नहीं, क्या clear नहीं is diagram? Sir, ये clear नहीं. You immediately go there, there are 5 cases listed, take the shortest case, click it, that case is open. The boy can read and you can discuss that. This is having a kit, वो मेरे पास है नहीं, टूट गया. This was an improvement over Chinese goods. That is, I had a speaker. This, what you're finding is a speaker with SD card, with USB, with FM, Bluetooth. But what this boy has done is something even more interesting. The Chinese goods are sealed packets. So if the battery fails, you had it. So what we have tried to do, how can we replace the battery itself? So you can take 6 battery cells and go to interiors. And even if the battery is discharged, you can replace it by buying it from any shop, A3, and continue. So if you want to read, you read. If you want to listen, you listen. If you want to see on TV, you just, through Bluetooth, you connect to TV and see on TV. So the entire literature is available right in a small bag. So एक बैग रखा हुआ है हमारे चारपाई पे, वही पलंग पे एक बैग रखा हुआ है, पिंकी वाले कमरे में पलंग पे सिरहाने एक बैग रखा हुआ है. So you just ladies' purse hang on your shoulder, and everything is there. And the books that we have here, my entire subject book you can keep in 4 pockets of your trouser.
sorry, Safari. 2 pockets here, 2 pockets here, 4. So 4 volume whole SM book and cases. बस this is all. इसी में किताब भी है, सब कुछ है? हाँ, तो हाँ, टूट गया बस। सरिता जरा इधर आओ, इसको अपने कंधे पे डालो और बता दो, बस यही है। ये आप पर्स लेके कंधे पे, जैसे लेडीज पर्स होता है, उसी में पूरा एसएम का कोर्स मटेरियल, and you don't need to carry the entire course material every day to the classroom. 4 sessions, so 4 subjects, 1 volume each, and a whole day's material you can carry in this. There is a SD card in which it is stored, so if you want to discuss a case with the students and with the classmates in canteen, you can just play there. If you want to listen yourself, put earphone. If you want to give volume, you just switch on the speaker, and the classmates can also participate, and 4 of you can discuss and prepare the case and present in the class. So these were the things which we found. It was homemade, thanks to my dear. गेट खुला हुआ, क्या खुला हुआ है? इसको जरा बैक कर लो। हाँ, बैक कर लो, बैक कर लो। I think now it is time to inaugurate, and there is nothing big. हाँ, एक मिनट। देखो ऊपर कोई है, ऊपर थोड़ा, एक मिनट। हाँ, ये जरा एक्सप्लोर ए गोल्ड माइन, इसको जरा आगे चलो। हाँ, ये लाल वाला strategic management. With this, you can design 3 credit, 90 sessions course on strategic management, and AICT will never ask you to have more than this. Back to अच्छा, इसमें चलो जाओ, इसमें वो भी, हाँ, now we come to strategic management, क्लिक करो। हाँ, इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? हाँ, उसे सॉर्टिंग, नीचे प्रोसीड टू बाई, ग्रीन पर, लेफ्ट पे आ जाओ। हाँ, now here where Mr. Manoj Sinha has helped me, you click on a case. So after sorting, suppose you want to conduct a course for 15 sessions, you sort the Excel file and those cases will come. Now click karo, yellow color pe jo hai na course material, just click. Okay, so you can take the case as a short cases book. The book pe jaake karo, short cases book, click. ये website थोड़ा slow है. Now you can buy any of the chapters of cases piece by piece, 20 rupees flat. तो मिकी कोई ले लो, 1-2 को 1-1 कर दो। एक और कर दो, नीचे आ जाओ, चेक द कार्ड, अब ऊपर आ जाएगा, ऊपर चलो। मिकी ये स्क्रॉल कर लो,
हाँ हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, चेकआउट आएगा. और क्या प्रोसीड लिखा है? बाय प्रोसीड. अच्छा, ये वेबसाइट थोड़ा हमारा सर्वर जो है स्लो है. नेट, हाँ नेटवर्क में हॉप्स बहुत है. ये आ गया, नीचे आ जा. हाँ हाँ. Now this is your cart. You can straight away buy, pay and buy and download. So if you want to design a course, 15 sessions, you can just click on those course material, pay multiplied by 20 and check out, download, print on your own printer in the office and get it spiral bound from a roadside shop in the neighborhood. And in 1 hour, you have entire course material in a book form. Something which I was finding very difficult because the book is printed, it took 15 days, then dispatched and not delivered. So this is, the command is in the hands of the user, customer. If you want to print only 1 chapter, 2 chapter, 3 chapter, you don't need to buy the whole book. Why should you buy the whole book? Have chapter wise, print it and bind the book yourself. After spiral binding, if you want to have perfect binding, you can do it yourself in 1 hour. So no need to run around. And so long you are in office and your printer, you just don't need to go anywhere. You can complete the thing, whole thing in 1 day. And if you want more copies, you can go to nearby shop, Xerox shop, and have course material for the participants. Ab back aa jao. Back aa jao. Back aa jao. Back aa jao. So close karo. Okay. Now we come to inauguration part. And the whole procedure of inauguration is so interesting and simple. I don't know. Now the process of inauguration is very simple. This is the private. ये है प्राइवेट, ये अभी पब्लिश नहीं हुआ. So you just go there, okay, and you have to modify. This is private, okay, just public. So it is here we do private. Okay.
अब आप इसको copy करके click करो. Sir, we can't hear you, sir. Doesn't matter. Not speaking very much sensible. Now, you can make a video on YouTube, keep it private, and schedule launch. On that day, you can make it public. And therefore, आप लोग इसको कागज पकड़ बस यहाँ पब्लिक पे जाके क्लिक कर दें. पब्लिक पे हाँ, एक बार क्लिक कर दें बस. ठीक है ना? डन. अब ऊपर कर दीजिए सेव. Now, mobile version I have sent to you people. This HD version. So if you see this HD version, the same thing. व्यू कर लीजिए यहाँ पे. Yeah, this HD version. If you see it on screen also, it will not get disturbed. So now this becomes public. अभी तक प्राइवेट था. वो जो दिखा रहा था वो नहीं प्राइवेट नहीं था, वो मोबाइल वर्जन दिखा रहा था मैं आपको. हाँ अभी देखिए इसमें बहुत क्लियर आ रही है. इसी को अगर आप इसमें देखें मोबाइल वर्जन में, मोबाइल पर तो दिख जाएगा लो रिजर्वेशन है, लेकिन लो रिजर्वेशन. देखिए इसमें जो आ रहा है खाना पिए खाना ये सब बनाना है. तो अब पराठे बना लीजिए, जरा मेरा आटा लाओ. अच्छा ये मेक इट लाइव बनाएंगे. अदरवाइज तो होगा कि नहीं किसी लेकिन इस स्टेज में आके ये सब करना बहुत है. कितना एफर्ट उन्होंने करा है. ये वाली चाय हमारे पास उनका भी मन करेगा आपका प्रार्थना. ये जो है ना जो सोहर गाने का था ना, जिनको सोहर गाना है और अगर आप प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट अब यहाँ से बैठ रहा लास्ट लाइफ पे जाएंगे.
Videos. हाँ 4 minutes ago आ गया। Manage video. Manage. इधर ये भारत जापान ये नहीं ये लगातार कौन होगा नहीं। बात बनाएंगे। क्या बात। म्यूजिक आपने बनाते हुए लाइव चल रहा है। यही तो बताना चाहता है, ये भी किया जा सकता है। कराओके डाला है कराओके भी है, कराओके में पिक्चर नहीं होती। हाँ इसीलिए वीडियो तो चल रहा है आवाज आ रही है कराओके का अच्छा म्यूजिक कराओके कराओके साथ गाया तो उसको लिप्स इंप्रेशन आता है। इसमें आपने इंटीग्रेट कैसे किया ये हमने ये वीडियो बनाया जैसे पिक्चर वो थी ऑडियो मिला था। अच्छा रीशूट किया ये शूट नहीं, हाँ वीडियो बनाया था। तब हाँ ये वो वाली ओरिजिनल वीडियो है, उसकी ऑडियो म्यूट कर दी, ऑडियो करो के सॉन्ग रिकॉर्ड किया था अपना, वो इंटीग्रेट किया और क्लिप से की है कि कहाँ पे सही हाँ टाइम लाइन पे रख के उसके बाद उसको दोबारा से रेफर कर दिया। यूट्यूब पे फाइल चेंज हो गई होगी ना ये नहीं अच्छा है। नहीं आती तो क्या करें? हाँ और बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम है ना,
पेशेंट तो सर का नहीं है। कितने दिन लगते हैं, कितना टाइम लगता है। तो हम कौन सा बहुत बिजी आदमी आपने अपने टाइम को यूटिलाइज कराया ना। हाँ, नहीं लोग कहाँ करते हैं। लोग तो सोचते हैं आप क्या रिटायर हो गए, बेकार हो गए, क्या करना, आराम की जिंदगी जिए, बहुत काम कभी सोचा नहीं था बाजा बजाएंगे। उसको कहते कहते उनके जो वर्ड्स हैं वो समझ हाँ अपने बात नीचे नीचे ये है दो है इसको नीचे है बड़ी बड़ी उसके ऊपर तो 12 ज्योतिर्लिंग दिखा देंगे। मेरे तो बस 3 बच्चे हैं। मेरी हम लोग मल्लिकार्जुन जाके मेरा मल्लिकार्जुन, भीमा शंकर और बसवेश्वर। ये बच्चे हैं, हम लोग 3 तीनों बच्चे एक साथ इधर हुआ है। इधर नहीं गए। अब यहाँ पर भरी हो गई क्या खाट तो इसके बाद देखना ये खाट देखिए कोरोना गाड़ी आई जो मार्केट में नहीं हाँ वो बेहतरीन गाड़ी आगे देखिए मेरा कि मैं कुछ कर नहीं सकता ऐसा गाना गाया क्या हो गया। हमने कहा मामा तो जिंदगी कहाँ रुकी है। क्या बात है। लॉन्ग लिव लाने आप सकते हैं।
हाँ ये हाँ सुख के सब साथी दुख में न को मेरे राम तेरो नाम साजा तू जान को जीवन राति जाति छाया ये कहाँ लगा दिया जीवन ठीक है लगा ऐसा नहीं बंद पिटवा दे ठीक से पिटवा झूठी काया झूठी मान आज तक हमने उन्हें नाराज होते कभी देखा नहीं। कितने इसमें थोड़ा गाना वाने का है और क्योंकि अब बहन भी तो आपकी इन्होंने किया ना थोड़ा सा मैंने वैसे भी देखा काइस्ट कम्युनिटी में गाना बजाने का है ज्यादा होता है ना अभी तेरा जितना संपर्क है उतना म्यूजिक का काफी काफी शौक रहता है हाँ और सबको आता नहीं सबको आता नहीं हम लोग के घर में तो बिल्कुल नहीं गाना सुनेगा क्या करेगा तो हमको मतलब हमने अपने फ्रेंड सर्किल में हमने यही देखा सब लोग एंजॉय करते हैं बिल्कुल हाँ कोई भी छोटा फंक्शन आपकी जमीन की जो डिफिकल्टी है वो सही हो इसलिए आपको ब्लड टेस्ट हो जाते हैं ये तो पता ही है लाइफ में क्या नहीं ये जो मंदिर में गाते हैं ना लोग उस तरह ढाबे का माहौल इतना इंसान समझ जाए तो दुनिया में सब झंझट ही खत्म हो जाए तो मुझे तो बहुत अर्ली एज में समझ आ गया मेरी मदर मेरे से कहती थी हमेशा तुझे किसी चीज से लगाव नहीं मिलता किसी चीज से नहीं है मैंने इतनी कम एज में मैंने इतनी सारी चीज देखी जब आप मौत को अपने इतने नजदीक से देख लेते ना उसके बाद आपको दुनिया में किसी चीज से लगाव नहीं रहता
एक ईश्वर से ही रहता है बस। लगता है ये सब धन दौलत यहीं छोड़ के जाओगे, कुछ अच्छे काम करके जाओगे। ये चीज नेताओं को कौन समझाए? देखिए, अगर बुरे लोग नहीं होंगे तो अच्छे लोगों की पहचान नहीं होगी। तो सृष्टि में तो अच्छे बुरों का पहचान कैसे होगी? है ना, कौन अच्छा है कौन बुरा है? कौन बुरा है, और फिर ये दुनिया चलेगी कैसे? क्योंकि सृष्टि का नियम ही है कुछ ना कुछ हो गई, उसके लिए बहुत जरूरी है बैलेंस। सब अच्छे ही हो जाए तो वो भी नहीं समझता। ऐसे ईश्वरी माया है, उसने बनाए हैं अपने हाथ में, उसने वो रखी है चाबी। हो जाएंगे तो फिर मोबाइल फोन बिकेंगे कैसे? पीएम साहब हाँ, साहब की चाय पिए। तो अब म्यूजिक इतना आ गया है कि आप चक्कर में खड़े हो जाए नहीं सर, अच्छा म्यूजिक से एक आपका माइंड बहुत मतलब होता है कूल। ये है कि आपको मतलब कोई भी चीज लगे तो आईएम के ईयर्स के दौरान एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप नहीं करते थे सारे टाइम जो मुझे याद है सिवाय एकेडमिक के नहीं, तब टाइम भी नहीं मिलता था ना सर, इतना बिजी शेड्यूल रहता है। हाँ, टीचिंग से कहाँ फुर्सत मिलती है। और मुझे लगता है रात में जगने की आदत में उसी टीचिंग टाइम से शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए कोई भी टीचर 2-2:30 से पहले सोता ही नहीं है। अरे मतलब क्या, आपको कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस झुमक के रहिए, खाई पीते सुनिए को ये सूख के क्या मानेगा? ये सारा घंटे तो भाषण में बोला भाष करो, मैं हाथ में आप मजाक करो, वैसे मजाक क्या कि मैंने 1965 से आज तक कभी 7-8 घंटे रेगुलर सोया ही नहीं। हमको हंसते देख जमाना जलता है, चोर बनो या मोर यहाँ सब चलता। इन गायकों ने अपने जमाने में सुरों का ऐसा समा मैं चाय कर साइड में स्लो दिखाना हो तो बता सकते हैं। हाँ बस उसको बनाते हैं। इस एज में इतना मल्टी फैसेटेड हो जाना है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बड़ा रेयर है, बहुत कम देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा तो जो इन्होंने प्लांट जी जी वो हमेशा के लिए एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया सिस्टम में। ऑक्सीजन प्लांट वाले दिखा दो। अभी
बहुत सी लेडीज होती ना, अरे घर का टाइम नहीं लगता, जब उन्हें कोई भी ये काम बता दो ना कि आप ये कर लो, अरे इतना तो टाइम नहीं है। मैं यही सोचती कि लोग ऐसे दिन भर घूमती रहेंगी तो कोई कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। ये है अगर मैं सोचती हूँ कि जैसे कई लेडीज मेरे से कहती है आपका टाइम है, टाइम तो मुझे पता ही नहीं चलता कैसे कट जाता है। कभी हम लोग का कटता नहीं, जो जैसे मैंने आइडियाज देखी भाई सोसाइटी के अंदर हम इतना भगवान की दया से सेल्फ मतलब वो है कि किसी के लिए टाइम आता है ना कि हम सोसाइटी के लिए बैक में कुछ करें, वो हमें सोचना चाहिए कि अपने लिए तो भाई बहुत ईश्वर की दया से सब कुछ है, तो हमारा लाइफ का एक पार्ट होता है कि हम दूसरे को दें। तो उसके लिए मैं जब आइडियाज बताती हूँ, अरे चलिए ऐसे कहाँ से कैसे, वो उसमें बहुत कम लोग उसमें लोग नहीं इंटरेस्ट लेते एकदम से कि भाई आप गरीब बच्चे, आपकी कॉलोनी के जो वर्कर हैं उनको आप बैठ के एजुकेट कर दीजिए, पढ़ा दीजिए क्लास में, है ना, घर बुला लीजिए उनको, मतलब उनको कुछ ऐसा हुनर सिखाइए कि भाई वो आगे बढ़े किसी तरीके से। क्योंकि मेन तो वही है कि हम सोसाइटी में अगर हमें कुछ दिया ईश्वर ने तो हम बैक किस तरह से देंगे। अगर हम एजुकेशन लाइन में तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि भाई जो वर्कर आते हैं आजकल के बच्चे भी जो है शैतानी में ज्यादा वो है। नहीं शैतानी में देखिए बच्चे नहीं है। मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं एक गाँव गई, वहां पे मैं ऐसे ही दे रही थी कि मतलब जहर भी किसान जो होता है वो जहर इतना डालता है, तो मैंने कहा अन्नदाता की जगह आजकल जहर दाता हो गया है ना, कि सारी सब्जियों में उसमें। तो मतलब मेरा प्रोग्राम चल रहा था, मैंने बीच में कभी ये लाइन बोली होगी, मैंने कहा कि नहीं डालना चाहिए। तो बाद में एक लड़का मेरे पास आया, कह रहा मैडम आज तक इस गांव में कोई भी हमको ये बताने आया ही नहीं। मतलब गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, जब मैं खुद एक्सटेंशन में रही तब मैंने देखा कि हवा पानी बस कागज पे हो जाता है, रियल में उन लोगों को पता ही नहीं बेचारों को। बहुत सी जो इनकी स्कीम्स है वो पहुंचती नहीं वहां तक। एकदम से मैंने कहा मतलब कि कहते तो वो एकदम कहता जब हमें पता ही नहीं, बोला बोतल में दूध है कि जहर है, जब उस माँ को पता ही नहीं तो बच्चों को तो कुछ भी पिला देगी। तो बोला वही हाल हमारा है। बोला जब हमको पता ही नहीं है ये चीज की कितनी मतलब जहरीली है हमारे, बोले आज हम लोग की आंखें खुली हैं इस पे, मतलब पेस्टिसाइड हम डालते थे। बाराबंकी में मैं रही, मतलब कृषि ज्ञान केंद्र में थी, तब मेरा गांव वालों से संपर्क हुआ। मतलब टीचिंग में आप रहिए तो आपने क्लास पढ़ाई चलेगा, आपको दुनिया का मतलब नहीं रहता। फिर हस्बैंड जब IIM में आए तो मैंने ट्रांसफर ले लिया, तो बाराबंकी उसमें आई। तो गाँव में मैं जाती थी प्रोग्राम, तो हमारे हेड उनसे कहते थे मैडम आप तो एकदम परेशान कर देती। मैंने कहा देखिए जाना है तो जाना है, ये नहीं कि करना। मैंने कहा जब हम सोसाइटी को कुछ वो नहीं कर पा रहे तो कम से कम अपने मुंह से ही हमें बताना है, कम से कम बता तो दें। मैंने कहा ट्रेन की जो हम कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं। बॉगी चलती है पूरी ट्रेन की ट्रेन, और सोचो पूरा वो फोरेट जो होता है ग्रीन कलर का, उससे ये लोग वो कर देते हैं। एक जगह मैंने देखा डीजल, जो पुराना डीजल नहीं होता, खराब डीजल जो इन लोग के ट्रैक्टर वैक्टर से जो चूटा है, उसको लेके बैठ के ऐसे बैगन में ऐसे 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 घुमा रहे थे कि ये जाएगा तो फ्रेश लगेगा एकदम से, मतलब ऑयल का। आपने काय में करी एग्रीकल्चर? ये मेरा एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है, कीट विज्ञान, तो उसी में मैंने BSc करी हुई है। अच्छा, मैंने यहाँ से करी थी आगरा यूनिवर्सिटी। अच्छा मेरी भी वहीं की है, नारायण डिग्री कॉलेज। मैं जाट डिग्री कॉलेज में पढ़ा, उसके बाद हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से मैंने किया। इंजीनियरिंग में चला। तब मुझे लगा कि सच में लोग कितना गलत करते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको ढंग से करिए, मतलब नहीं तो मतलब ऐसा मत करिए, बताइए। अगर आप उस लायक हैं तो कम से कम बता तो दीजिए आगे। फिर अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे कहने से 2-4 लोग भी अगर दिमाग में आ गया, क्योंकि ज्यादातर मैं देखती थी कि प्रोग्राम्स में वो लोग आते थे जिनके पास खेत नहीं होता था,
क्योंकि वहां पे क्या होता है कि गवर्नमेंट के उसमें कि आपको चाय मिलेगी, खाना मिलेगा। तो मतलब तब मुझे लगता था कि कितनी गरीबी है भाई इस देश में, कि एक एक समोसे के लिए आप अनाउंस करते हो कि अभी आपको चाय मिलेगी, खाना मिलेगा, लोग बैठे रहते हैं आपकी बात सुनने के लिए, और जहां आपने बांटा वहीं लोग गायब हो गए। हाँ, तो मतलब उसको बीच बीच में हम लोगों को बोलना पड़ता था। मतलब हमारे संग के जो जेंट्स लोग थे वो कहते थे भैया आप हम लोग को एकदम छटा मारती है। हमने कहा आप लोग तो करे, हम लोग की तो कोई सुनता ही नहीं है। अब बोले लेडीज बोलती है तो उनको लगता है कि भाई अगर कोई लेडी बोल रही है तो इसका मतलब कोई इम्पैक्ट है बात का। और मैं वही चीज बोलती थी जो मैं खुद करती थी। आप सोचिए बाराबंकी में मैं थी तो वो पॉलीथीन में चाय आती थी, गाँव में आप किसी घर जाओ तो चाय पियो, है ना। मैं मना करती रही, मैं चाय नहीं पीती। तो मैं घर आई, उस दिन से मैंने चाय पीनी छोड़ दिया। आप सोचिए, दूध वाली चाय एकदम छोड़ दी मैंने, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं लाइफ में खुद नहीं ये चीज करूंगी और मैं दिन भर कितना झूठ बोलूं लोगों से। क्योंकि गांव में आप जाइए, कोई दूध मट्ठा किसी के पास नहीं, केवल वो चाय ही पिलाएगा, वो ग्लूकोज का बिस्किट देगा आपको, बस, है ना। तो मुझे लगा कि जब मैं अगर दिन भर इनको प्रोग्राम में आऊंगी, दिन भर बोलूंगी भैया मैं चाय नहीं पीती, पर ईश्वर तो देख रहा है कि आप पीते हो। मैंने उसी दिन से कसम खाई कि मैं चाय नहीं पीती। और फिर मैं, हाँ आप सोचो, तब से मैंने आज तक बुद्ध भी तो थे वो तब से मैंने चाय पीनी, ब्लैक वो नहीं छोड़ी थी मैंने चाय पीनी। मैं उसमें गर्म पानी पीती, मैं दूध की चाय पीना छोड़ दी है। कभी कभी होता है तो ग्रीन टी वो ले लिया, नहीं तो मैंने छोड़ दी। मैं, हाँ भाभी जी, दूध की तो मैंने छोड़ दी। हाँ बस, जैसे कई बार गला वो होता है तो पी लेती हूँ, अदरवाइज नहीं। बस वैसे भी कहते हैं कि ब्लैक टी ज्यादा बेटर है। नहीं, मुझे अब चाय जैसे छूटी है मेरी, मैं पानी गर्म करके पी लेती हूँ कप में। किसी घर जाती हूँ, भैया कहते तुम्हें ज्यादा शौक है तो कप में हमें गर्म पानी दे दो, आप लोग चाय पियो, कप के अंदर क्या पता क्या पी जाए। एक तो आपका मेंटल उसकी बात होती है। नहीं, लोग कहते हैं सुबह वो नहीं होता, वो नहीं होता, पर आपकी इच्छा शक्ति हो ना तो दुनिया में आप कुछ भी छोड़ सकते हो। वो तो है ही है, हाँ। इच्छा शक्ति के तो ऊपर अब पर मुझे लगा कि ईश्वर तो ऊपर देख रहा है ना, कि हम झूठ बोल रहे हैं दिन भर। हस्बैंड बोले तुमको, हमने कहा देखो भाई हम झूठ बोल रहे हैं, हमको लगा ये गांव वालों से हम झूठ बोले और घर में हम आके पिए तो ऊपर वाला तो हमें दंड देगा ना। आज नहीं देगा, कहीं देगा कि तुमने हमारे तो अकाउंट में वो झूठ चलेगा ना वो एकदम से। तो मैंने छोड़ दिया ऐसे ही करके। जैसे किसी ने मेरे से कहा, मेरा ये हो रहा था कि आप ठंडा पानी एकदम फ्रिज का छोड़ दीजिए। मेरे 18 एक्सीडेंट हुए हैं अब तक। अब सोचिए, ट्रैक्शन पर भी रही, बॉडी हो रही, पर मुझे कि हर बार चल चल के मैं, मतलब ईश्वर की कृपा से इतनी हिम्मत है कि मैंने शंकर जी से, मेरी आर पार की लड़ाई हो गई थी महादेव से कि भाई अगर आपने मेरा ये एक्सीडेंट किया और मैंने इस जन्म में सपने में भी किसी का कोई मतलब गलत सोचा भी नहीं है, मतलब बुरा करने की बात नहीं, कभी सोचा भी नहीं मैंने कि मैं किसी के प्रति मेरा मतलब व्यवहार है, किसी का लोगों में द्वेष होता है, जलन होती है, उसका देख लिया। मुझे कभी किसी की कोई चीज देख के आज तक लालच भी नहीं आता, चाहे किसी का कुछ भी पड़ा हो। और ना कभी किसी चीज की देख के है उसके पास तो खुशी होती है कि चलो इसके पास है, पर मुझे ये नहीं आता ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप देखिए पानी छोड़ दीजिए, आपके पेन सारे बंद हो जाएंगे बॉडी में। हाँ, पानी छोड़, ठंडा पानी छोड़। वो वैद्य जी के पास गई, उनकी बॉडी एक्सीडेंट बहुत होते हैं बॉडी में। तो मैंने उस दिन से ठंडा पानी पीना छोड़ दिया। अच्छा, तो मैंने देखा इच्छा शक्ति इंसान की कुछ भी उसको करा सकती है अगर वो रखे बिल्कुल। नहीं, बहुत से लोग इसी में परेशान रहते हैं। जैसे मेरे विधानी थी, उनको कहा गया चावल छोड़ दो, डॉक्टर ने बहुत मना किया, नहीं खानी। अब फिर मैं उसी से उनको इतनी प्रॉब्लम होगी, बोली छोड़ी नहीं, कौन सी बड़ी चीज है, छोड़ दो। दुनिया में 1 सेकंड का जीव का स्वाद होता है, उसके पीछे कितना ज्यादा सारी जिंदगी स्वादिष्ट करा है, तो अगर थोड़ा वो कर लोगे तो क्या, उसके अंदर क्या करोगे। और डॉक्टर ने ऐसे कहा था कि आप वॉक करती रहिए, जिस दिन आप वॉक करना बंद कर देंगे आप चलना बंद कर देंगे। कोरोना में आप सोचिए घर में ऐसे सोफे से दर्द, घड़ी में ट्रैक करके कितने स्टेप हुए, मतलब करने हैं दिन भर में, मतलब वही करते रहते।
कि अगर नहीं तो बॉडी में सच में जिस दिन नहीं हो पाता है, जैसे कहीं गए बाहर लेट वेट हो गया, रुके फीस जाती है, तो अगले दिन बहुत बॉडी में फील करता है, तो बॉडी भी उस हिसाब से बन जाता है। इंसान कुछ भी कर सकता है, वही मैं सर पर देख के मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। इस एज में भी आप लगे रहते हैं एकदम से ना। हमने कभी इनको बैठे नहीं देखा, बहुत कम। और जो बैठ गया फिर वो बैठ जरा बैठे फिर उठ के चलने लगे। अपने आप ही करेंगे, ये नहीं कहते हैं किसी को। तो वही चीज होती है कि इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने से आपकी लाइफ में बढ़ जाती है। अगर आप बैठ जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि घर में आप बीमार हो गए। कभी भी आप घर में लेटे हैं तो उठ लगता है उठ ही नहीं पा रहे, जब उठ के चल दीजिए तो वो सब चीजें ठीक हो जाती है, सिर दर्द भी ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तकलीफ को जितना पाली उतनी बढ़ती है वो। जब कोई लेडी मेरे से ऐसी बोलती है दर्द हो रहा होता है तो मुझे हंसी आती है कि इतने दर्द तो मेरे हर समय शरीर में रहते हैं, इसको लगता है वही लाइफ ईश्वर ने दी है तो कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, उसकी मर्जी है, वो जैसा हमको रखना चाहे वैसा हम रहे लाइफ। सब इंसान उसी सब में एकदम परेशान होता है। बाकी बनाते हैं। तो खाना क्यों बना के आई? अपनी बच्चा तो वो पराठा बनाने में लगे हैं, आप नहीं। ये 2 बजे तक पहुंचे हैं। हाँ तो आ जाती है यहाँ से। मैं क्या पता हूँ, बोल दो आ जाए तो बोल बोल दो। फ्लाइट में होने वाला है, यहाँ खाना इतना बना है, फ्लाइट में हूँ, बोल दीजिए अभी फ्लाइट में हूँ। अभी फ्लाइट। अरे हमारे पति मैसेज व्हाट्सएप देखते ही नहीं, इतने मजेदार है वो फोन से कोई वो नहीं रखते, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के हैं प्रोफेसर। उनको जैसे एक बार बहुत फोन आ जा रहा मैंने फिर उठा दिया, उनका किसका फोन है, आर्मी वालों का था, वो भाभी जी आर्मी में प्रोग्राम करना था स्ट्रेस मैनेजमेंट का। तो वो कहता है अरे सर को इतना फोन ट्राई करा, मैंने कहा देखिए सर का फोन घर में है, और जब आपके इतने फोन आ गए तो मुझे लगा भाई कौन है जरा उठा लो। अरे कल हम लोग के यहाँ प्रोग्राम है तो उसके लिए वो करना है। मैंने कहा सर ने आपको टाइम सब फिक्स है, मैंने कहा वो पहुंच जाएंगे, आप एकदम परेशान मत होइए। मैंने कहा वो खुद स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो इसलिए वो मोबाइल के जाते खोला नहीं खोला है ना। सर मोबाइल सबसे बड़ा स्ट्रेस देता है आदमी को 24 घंटे। और आजकल आप देखिए जितनी हमारी सोसाइटी में शादियां हो रही हैं टूट रही हैं खाली मोबाइल के चलते। लड़की गई ससुराल में, कुछ वो हो गया, तुरंत माँ से गई, तुरंत माँ भड़की, तुरंत एकदम से वो हो गया। पहले जमाने में चिट्ठियां आती थी 10-15 दिन में पता चलता था क्या हुआ, आदमी स्ट्रेस में नहीं रहता था, तुरंत होता है, तुरंत रिएक्शन हो रहा है। सर मैं तो देख रही हूँ ना कि जिस शादी में जाओ अगले साल तक पता चलता दोनों डाइवोर्स का केस फाइल ही दबाए। ये हालत हो रही है हमारी सोसाइटी की। क्योंकि जो लड़की घर में अपनी माँ को एक गिलास पानी नहीं उठ जाती वो सास को क्या देगी, ससुर को क्या देगी। आजकल जो कल्चर हो गया है, आप घर में नहीं बेटी और बेटी बेटा बराबरी हर करते भी बराबरी आपकी फिजिकल उसमें हो ही नहीं सकती है। हर चीज की बराबरी नहीं होती है भाई, लड़का लड़की दोनों की समाज में जरूरत है तभी ना आगे बढ़ेंगे। पर जो बराबरी एकदम से हो गई है वो बड़ी खतरनाक हो गई है एकदम।
उसका बड़ा मिसयूज हो रहा है एकदम से। वो भी बराबरी में नहीं हो रही है। अब लड़के ज्यादा बढ़ रहे हैं, अब लड़के डाउन हो रहे हैं, उल्टा हो रहा है। क्योंकि घर चलाने के चक्कर में ना हाँ उल्टा हो गया। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या पहले हाँ। लड़के लड़कियों के पीछे भागते थे, हाँ, हाँ। लड़के लड़कों के पीछे भागते रायपुर में चेंज हो गया तो हाँ। बर्दाश्त किसी की नहीं हो रही, किसी को भी। हमने अभी जब दो दिन में प्यार हो रहा है, 2 दिन में झगड़ा हो रहा है, चौथे दिन डाइवोर्स केस फाइल हो रहा है। तो ये अब तो किसी की शादी में जाने में डर लगता है कि अगले साल तक इनकी मैरिज एनिवर्सरी हो पाएगी कि नहीं। हमारा एक है ना? दोस्त है, ये हो रहा है सोसाइटी उसकी में। शादी में गए हाँ तो उसके बाद 2 साल बाद डाइवोर्स हो गया। हाँ। इस शादी में हम्म। तो एक और लड़का गया, कहता सर क्या देंगे, हम ये साला शादी करता रहेगा, हम लोग पैसे देते देते रहेंगे क्या? नहीं, ये मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा हो रहा है सोसाइटी में, बहुत ज्यादा हो रहा है। फैशन सा होता जा रहा है। फैशन बन गया। गरम गरम खाते थे। हम तो भाभी भी नहीं खा पाएंगे, अभी नाश्ता करते हैं, तुरंत नाश्ता करेंगे। नहीं खाऊंगी पर पूरा नहीं खा पाऊंगी, और तो थोड़ा मतलब पीस कर देंगे। फिर पूरा नहीं खा पाएंगे। ऑर्गेनिक सर कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक के नाम पे लूट है हिंदुस्तान में। ये बता दूंगा तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ। जमीन का कहाँ से वो हो गया, कितना पेस्टिसाइड कहाँ, कुछ नहीं है सब। नाम है खाली कि हाँ जी ऑर्गेनिक है। जिसको कुछ नहीं। पैसा कमाना था, जैसे कोरोना में हाँ। आप टेस्ट करा लीजिए, सबको कोरोना ही बता देता है। पैथोलॉजी वाले बन गए एकदम से, मतलब कि कोई डूबा तो कोई बन गया, ये प्रकृति का नियम है। जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी काम वाली थी, उसके जितने भी जिंदगी के अरमान थे सब पूरे हुए मेरे एक्सीडेंट के समय। सारा काम किया, पैसे मिले, वो कहती थी मुझे झुमके चांदी के ये वो जितने उसके अरमान थे सब मेरे एक्सीडेंट में पूरे हुए। तो ये मैं देखती कि ईश्वर ना उसी तरह से वो बनाता है कि किसी का दुख और किसी का फायदा। तो मुझे हंसी आती थी जिस दिन मैं चली, उस दिन वो लिटरली इतना दुखी हो गई थी कि उसके फेस से मुझे लगा, बाद में मैं अकेले कमरे में जाके इतना रोई कि मैंने कहा इसको लगा कि अभी चलने लगी, अब इनको हमारी इतनी जरूरत नहीं है। आप सोचिए, मैं फैक्ट बता रही हूँ आपको लाइफ का, कि फेस से पता चल जाता है कि क्या होता है। वही मैंने कहा कि वारे ईश्वर क्या है कि कहीं धूप कहीं छाँव वाला हिसाब है ना। तो अरे आप तो बहुत तेजी तेजी से सर हाँ। तो यहाँ तो पहले 10 लोग नहीं होंगे, पहले कितने, फर्स्ट कम फर्स्ट। मैं ले रहा हूँ। आप लीजिए। आप लीजिए पहले। एक और आ बहुत तेजी से